are live on YouTube also, and we are live here also. Great. Hello. We are live on YouTube also, and great, great, great. We will be waiting for just 2 more minutes so that everybody can join. And today I hope so I'm audible on YouTube. Perfect, perfect. Yeah. Let's just wait for till 8:02 until everybody just join over here, right? And talking about today, आज हम करने वाले हैं like we are going to create virtual machines, load balancers, and all. Like we are going to see what are the different resources available on Google Cloud. Correct. So if anybody is going to join, just let them know कि it's about to start. We will be waiting till 8:03. I sorry 8:04 because it's already 8:03, right? 10 seconds more. So 1 minute और रुकते हैं and we can just start, right? Okay, I guess हमको start करना चाहिए because we have to complete it by 9:30 also, right? Just for the confirmation, just hands up if I'm audible to all, so I can just begin. Grid, Grid Aditya, Vishakha, Shubham, perfect. So today, before moving ahead, I just wanted to open this Cloud Skill Boost Google. ये link, I don't know, like सबके पास access रहेगा इसका. So what is this link is all about? What is this Cloud Skill Boost Google, right? And you can see like यहाँ पे बहुत सारे courses दिख रहे हैं, यहाँ पे profiles हैं, paths हैं, explore, subscription, like there are multiple different things over here. What actually it is? Let's just start with this first, okay? So पहले तो मैं इसका link share कर देता हूँ in Meet also as well as YouTube also. Cool, I just sent the link. Correct. So what actually Cloud Skill Boost is? जैसे हमने कल देखा था, not कल, on Tuesday के सेशन में हमने देखा था कि Google comes with the various of the programs जहाँ पे Google Cloud actually tries to teach and give hands-on experiences on Google Cloud. करेक्ट. हमने देखा था कि Google Cloud के लिए जो different programs होते हैं which are supported by and backed by Google Cloud itself. So वो programs के लिए well, like most of the cases it actually give the courses which have the subscription of Google Cloud Skill Boost, the same site which we have open right now. Correct. So what this Cloud Skill Boost is? So Cloud Skill Boost में ना if you just go to explore field, like first of all you have to just like log in over here. अगर आपके पास subscription रहेगा, subscription से मेरा मतलब है कि if you have already logged in if you have already registered for Cloud Campaign, so you can just log in with the same email ID and password. अगर account नहीं है, then you have to create an account over here. Correct. So on Cloud Skill Boost, you will find कि भाई यहाँ पे बहुत सारे labs है. You can see more than 1000 labs, 1010 labs. Correct. So 1010 labs जो यहाँ पे है, what is this all about? So it includes all the different perspectives, all the different use cases of how Google Cloud can be useful for you, right?
Not only यहाँ पे it can be like BigQuery, it can be AI, generative AI, responsible AI, LLM, big lag, LB, load balancer, virtual machine, VPCs, firewalls, hosting, everything. Correct. So for today's session, I'm just going to start with creating a virtual machine lab. Correct. Creating a virtual machine. Why I'm going to start with this? Because I want to explain you all कि actually में cloud skill boost work कैसे करता है and how actually different resources of Google Cloud are being used. Correct. So मैं for this particular session, for today's session, we are going to start this create a virtual machine, this lab particularly. Correct. Create a virtual machine. This lab cost you 1 credit. So if आप लोग के पास monthly subscription है then it's good. But if you don't have, just let me know. So मैं credit share कर सकता हूँ right now. If you have monthly subscription and if you have enrolled for Cloud Campaign, just raise your hand, or else you can just comment in the chat box or in the comment. Okay, Shiash, you have Manoj, you have Atta Thakur has correct. What about other Roshni, Udit, Apurva, Aniket? Do you guys have monthly subscription or even a credit to start this lab? This will create a virtual machine lab. Yes or no, or if you don't, just let me know in the chat box or you can say comment box. Shubham Yadav, very good. Great. I hope so. Most of you has the credit. So for the being on the same page, I am sharing this link also. So the link is of creating a virtual machine lab, correct? So what actually we are going to do in this lab? So before starting the lab also, just an overview of this platform कि यहाँ पे है क्या क्या. So you can see in the left corner there is a start lab button. There is some timer like 40 minutes. So ये particular lab सिर्फ 40 मिनट तक available होता है. After 40 minutes it is going to be ended by default, correct? If you just scroll down a bit, you may find कि यहाँ पे ये GSP 1001 is the code of this lab. After that, there is an overview which is given. Overview यानी कि it is related to your topic. Suppose my topic है creating a virtual machine. So there will be overview कि virtual machine क्या होता है. Like Compute Engine allow you to create virtual machine that run different operating system, including multiple flavor of Linux, Debian, Ubuntu. So you can read this. It's nothing but it's just going with the background. You can say background about what you are about to do. Correct? जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा overview, थोड़ा सा background है. Next you will find कि what you will do. In this what you will do section you are going to see कि ये particular lab में हम आज क्या करने वाले हैं. Correct? So इस lab में आज हम एक virtual machine बनाने वाले हैं. Then after that we are going to create a virtual machine with gcloud command, and then we are going to deploy a web server in this same virtual machine. So in short हम एक server बनाने वाले हैं Google Cloud पे. Server using two ways. हम GUI यानी जो cloud console होगा उसके way से प्लस हम कमांड लाइन के हेल्प से भी एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे. ऐसे हम दो वर्चुअल मशीन बनाएंगे. अपार्ट ऑफ दैट हम वर्चुअल मशीन पे वेब सर्वर यानी कि अपना वेबसाइट होस्ट करेंगे. ठीक है. What is the prerequisite for this? So for this you should be aware of basic Linux command like vim, nano, and if you just don't know, it's not something or rocket science. It's a very basic one जो first time user भी आराम से समझ जाएगा. Correct? So you don't have to take care of, you don't have to think about that, right? Sorry. Great. After that, what next? Setup and lab requirement. So here you are going to. So if you just scroll down whole now, so यहाँ पे पूरा हमको you can say एक help menu दिया हुआ है कि हमें actually में ये lab में करना क्या है. What are the different tasks we have to perform, and at the end it's going to end, right? And in the right corner, if I see, I can see here the different bookmarks. Then here is a tab of yellow where यहाँ पे checkpoints होता है कि like अगर मैंने एक VM instance बनाया, उसका Nginx server install किया, तो मेरे को 50 points मिलेंगे. अगर मैं वही same VM instance using gcloud यानी कि अपना command line से बनाया तो 50 points. So for completing this particular lab, I have to earn this 100 point. So you can consider these points as 100%. Correct? So जब मेरा ये 100 पॉइंट हो जाएगा, that is 100% हो जाएगा,
then only I will be said कि मैंने lab successfully complete किया and I will be eligible for the next lab, right? Okay. So before wasting the time, we will just start the lab. So for starting this lab or any of the lab, you have to just click like अगर मैं कोई दूसरा lab में भी, you have to just click on this start lab. What happens when you click on the start lab? It's going to create dummy user accounts like dummy username and dummy password in the background, right? And it's going to give you the show you like open a Google Cloud Console, correct? What actually it is. So यहाँ पे आप देख सकते हो this I mean sorry. So as you can see in the left corner there is a username given to us. So this username is nothing but email address, right? student1@quicklabs.net, and we have been also provided with the passwords, correct? Apart of that, there is a button open Cloud Console. If I just click on this button, it's going to open like this, right? So rule number 1, whenever you start the lab, just open this open Cloud Console. Always open this in new private window. Why it is so? हम हमेशा न्यू प्राइवेट विंडो में खोलते हैं. क्यों? रीजन बीइंग, अगर मैं इसको न्यू प्राइवेट विंडो में ना खोल के न्यू टैब में ओपन करके लॉगिन करता हूँ, राइट? सो वंस दिस टाइमर गोज आउट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद ये टाइमर बंद हो जाएगा. एक बार जब ये टाइमर खत्म हो जाएगा, मेरा जो ये अकाउंट है, जो डमी अकाउंट व्हिच इज प्रोवाइडेड ओवर हियर, इट गोइंग टू गेट एक्सपायर्ड. सो इट गोइंग टू बी ऑटो लॉग आउट, और जब ये लॉग आउट होगा तो साथ में जो मेरा पर्सनल अकाउंट लॉगिन है, दैट अकाउंट आल्सो गोइंग टू बी लॉग्ड आउट. ठीक है? सो ऑल द टाइम आई एम स्टार्टिंग द लैब, आई हैव टू लॉग इन विथ माय ऑल पर्सनल अकाउंट्स, राइट? सो ये हैप्टिक होता है. सो फॉर दैट यू ऑलवेज हैव टू जस्ट स्टार्ट ओपन दिस ओपन क्लाउड कंसोल इन न्यू विंडो इटसेल्फ, राइट? So if let me just share my complete screen. I will be sharing my complete screen to you all, right? Give me a moment. Great. What of that here also? I'm going to share my entire screen. It's visible, right? So okay, perfect. So right now what we have did, I'm going to close these extra tabs, correct? We have started the lab, right? After that, what we have done, we have started this lab and opened this cloud console into private window. So you can see in the private window it is open, करेक्ट? इट्स यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम है वो ऑलरेडी पहले से फिल्ड है. आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. यू गोना आस्क मी फॉर द पासवर्ड. आई एम गोइंग टू एंटर द सेम पासवर्ड. नेक्स्ट. आई अंडरस्टैंड. If any of you is doing this along with me, you can just hands up or just let me know in the chat box, in the comments, so that पता चलेगा, right? Great, great Aditya. Great Shash. So I have started this lab over here. You can see मैं यहाँ पे login किया and here is a window which is given to like जिसका this is a window. So this window is something जो एक्चुअल में गूगल क्लाउड का ऑफिशियल कंसोल है. ये विंडो जो ना वेब यूआई, इसको बोलते हैं कंसोल. You can see the URL also here. It is said as console.cloud.google.com, right? So this particular window is called as console, and after that, right. After that, if I just go to home page, I don't have to click on this. This is a console. Here I can see all the different services. Like in the left side, in the left corner, on the top, you can see navigation menu. जहाँ पे सारे services दिखते गूगल के, गूगल क्लाउड के actually. You can see a different services like API, billing, IAM admin, marketplace, compute engine, Kubernetes, cloud storage, BigQuery, VPC, etc. Right? So these are something that will be more fancy, but if you just learn the basics about what are these services are, these things are very interesting. And like, ठीक है,
we are going to cover the overview of at least majority of them. But before that, okay, let's just go with the overview only. Like अभी suppose if lab के through नहीं जाते हैं, let's just take the overview of what are the different things present in this console, right? So here you can see a project number and a project ID, right? So this project number, project ID, like it is something which is unique for everyone. This project ID, it can never be the same, right? Apart of that, you can see here quick access services. ये सारे जो services है, API, cloud storage, these are the quick access services जो like for the you can say ease, for the ease purpose यहाँ पे मिलता है. On the top, like here you can see select a project button, right? तो यहाँ पे already एक project बना हुआ है, right? If you want to create new project, you can click on new project and create the new project, right? But still, lab के वक्त हमें ये सब नहीं करना है. But for the learning purpose, I'm just going to explore you all the different things, right? यहाँ पे you can find like यहाँ पे search button है. You can see like search button where you can just search for any of the services. But on the right side of the search, you may find this button, activate cloud shell, right? You can find this button, activate cloud shell. If you just click on this button, it is going to open a shell in front of you on the same page. You can see here, cloud shell is open. Correct? So what is this? It is nothing but you can say this activate cloud shell button is going to open a shell like without creating a virtual machine. तो ये shell से हम actual में जितने भी सारे APIs और जितने भी सारे services है Google के, we can actually use them all. Like मैं यहाँ पे G cloud डालता हूँ, then I will get the error. These are the stuff I can do over here. Available commands like AI, ML and all. G cloud help. So actually, okay. यहाँ पे आप देख सकते हैं, like as you can see, there are multiple different flags, different arguments, different things which you can use in the G-Cloud terminal. I'm going to close this cloud shell. I will click on this left one, that is the navigation menu, right? So on this navigation menu, okay, before that, let me just see. Okay, everything is good, right? Perfect. So if you don't have, even though if you don't have your laptops with you, you can just watch it over here, and after that I'm going to post the same video on the YouTube, so you can just go through everything afterwards, right? Okay, for this particular lab, what you have to do, we have to create a virtual machine. So console में virtual machine कहाँ से बनता है? Virtual machine is a part of compute engine, correct? Like in the left you can find compute engine over there. तो compute engine actually में क्या होता है? Compute engine like word से समझ में आ रहा है, something which is related to computation. करेक्ट. कंप्यूटेशन किसका होता है? सीपीयू का होता है, राइट? एंड सीपीयू, सो दैट इन दिस कंप्यूट इंजन we can find everything related to servers or machines or which where we can utilize the computation powers, right? वहां पे हो सकता है वर्चुअल मशीन, वहां पे हो सकता है वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट, इमेजेस, सर्वर्स, नेटवर्क्स, करेक्ट? Let me know the basic code. So these are nothing but like in computer engine, mostly we always go for VM instance. There we can find the disk, we can find the images, snapshots. So these are different things we can find in the computer engine. So for now, for this particular lab, you have to open this VM instance. Brajesh Shetty, great. Great one. So if at any moment if you find anything difficult, just let me know, okay, in that comment itself. Okay, so if you just open this VM instance over there from the left navigation menu, compute engine, just open the VM instance, right? Here you can find that compute engine let you use the virtual machine to run Google's infra, create a micro virtual machine or larger instance, etc. Information is given over there, right? You can just scroll here, different things are mentioned. But what we want to create a server over there. You want to create a virtual machine over there, right? So for that, just click on this create instance, right? After clicking on create instance, it's going to ask you few questions. Okay, sorry, few questions. Question will be like, what will be the name of your server? जो server आपको बनाना है उसका नाम क्या होगा? I can give it anything. I can give it my first server, right?
even though I can give it something like G Cloud server, or even I can give it my name, Ashutosh machine. Correct, you can give it the name, but for this lab we have to first verify कि यहाँ पे कुछ specific mention किया गया उन्होंने. Correct, if you just go back we can see a little more back. Yeah, they have mentioned कि virtual machine जो बनाना है उसका ये specific नाम होना चाहिए, GCE lab. राइट, अगर हम कोई भी लैब चालू करते हैं, ठीक है, फॉर एक्सप्लोरेशन, अगर हमें पूरे सर्विसेज एक्सप्लोर करने, वी कैन डू इट एनीवेज, राइट, बट फॉर कंप्लीटिंग अ लैब यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं यू आर डूइंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन. So like for the task one, they have said to you create a new instance. So you have to create a new instance using this particular configuration itself. Otherwise, it won't be counted, right? But for like for example, I want to explore Google Cloud, right? So it's not always like कि मेरे को ये lab complete करना ही करना है. मैंने ये lab चालू किया तो अगले 1 घंटे तक ये credential तो valid है, right? So till this one hub, I can explore different services. I can see what are the different features available, what are different things available for me, right? What are different things which can be helpful for my use case. So all I can do is to explore all the different services. And अगर मैं that can be a question कि ठीक है भाई, अगर मैं सारी सर्विस एक्सप्लोर कर रहा हूँ और टाइम निकल गया, then what? So it is not going to ban you कि आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते. You can start the lab again, right? This lab can be completed within 5 minutes. It won't take more time than that. ये 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये वाला लैब. If you want to complete the lab actually, अगर सिर्फ लैब कंप्लीट करना है, so it's not going to take more than 5 or 10 minutes hardly, right? But for instance, like for example, I want to explore. What I will give the name Ashutosh machine. I can select any of the regions, right? So for now, I'm going to go for this same one, US West. USC. Okay, what's this machine configuration? Machine configuration क्या है? It's just like आप जो वर्चुअल मशीन बना रहे हो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, वो कितने सीपीयू का होना चाहिए, कितने मेमोरी का होना चाहिए. करेक्ट, मतलब जो वर्चुअल मशीन में बना रहा हूँ, जो सर्वर मेरे को चाहिए, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. मेरे को 3 कोर वाला चाहिए कि 5 कोर का चाहिए, कितने रैम का चाहिए एंड ऑल. ओके, ग्रेट. Next, if I go further, like suppose for example मैं भी फिलहाल के लिए standard one लेता हूँ, तो the standard configuration, the default configuration is E2. अभी for example मेरे को कोई एक application launch करना है जिसको बहुत ज्यादा CPU लगता है, I can go for this compute optimized one. ठीक है, if suppose कोई application है जिसको ज्यादा memory लगेगा, CPU बहुत कम लगता है, I can go for memory optimized one. Even though I can also go for this GPU one, जहाँ पे GPU रहेगा, ग्राफिकल कार्ड रहेगा. अगर मेरे को GPU एक्सटेंशन या फिर GPU रिलेटेड सर्वर्स चाहिए, but what will be impact of this? अगर मैं सब सेलेक्ट करता हूँ, the impact will be this cost, right? अगर मैं जनरल पर्पस का एक छोटा सा सर्वर लेता हूँ, right? लाइक लेट्स से मैंने लिया है 1/2 CPU 4 GB रैम, 4 GB रैम का, मतलब महीने का ये मेरे को $24 चार्ज करने वाला है. $24 for a month, so it will be nearly like $24 in INR, 2,000 rupees for a month, right? I can go for the custom, like I can select a smaller one also. मेरे को इससे भी छोटा चाहिए, एकदम छोटा, E2 micro, 1 कोर 1 GB रैम, सबसे छोटा मशीन, ये मेरे को कॉस्ट करता है $6 का. तो if I just check to INR, it's somewhat around 500 rupees. 500 रुपए घंटे का, और 500 रुपए घंटा कितना होता है कि 500 divided by 30. 500 रुपए महीना है ना, 16 रुपए एक दिन का. And also here it is mentioned $0.01 hardly, एक घंटे का $0.01 होते हैं. So if I just check $0.01, it's somewhat around 0.83 पैसे, 1 रुपए से भी कम एक घंटे का. So it's totally depend upon how you are going to select, आपका configuration क्या है और requirement क्या है, right? अगर मेरा configuration ये E2 micro में नहीं चलने वाला, अगर मेरे को 1 GB रैम 1 कोर वाला मशीन नहीं लगेगा,
मेरे को चाहिए बड़ा, तो बड़ा कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर, then I have to select the bigger configurations for my EC2, like the better one. So I can even though I can also go for different series, every series presents something new, something different for them. Like for example, अगर मैं N2 पे जाता हूँ तो N2 is more like performance wise ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसे थोड़े balanced में रहेंगे. C2 is like consistently high performance, ज्यादा performance, but पैसे equivalently बढ़ता है. So it totally depends. So for standard one, we are going for E2 medium, right? If you just go below, there you will find virtual machine provisioning, then display, confidential, container, boot days, API. These are different custom options we have available for us. So for example, अगर मैं E2 instance पे जाता हूँ, I just cancel and start it again, right? I just clicked on create instance again. I given here the name Ashutosh machine. Same configuration, default configuration. I'm not going to do anything. Virtual machine provisioning will be standard only. Then I will go further. I can see here deploy container, confidential VM. These are the different services which I will let you know in further. Like for now, अगर मैं अभी ये सब बताता हूँ, it might be confused you all, right? So you don't have to worry about this all. Talking about the boot disk, it will be like storage कितना चाहिए भाई और OS कौन सा चाहिए. So if I just click on change, you may find here operating system. कौन सा operating system चाहिए आपको, correct? So I can opt for just a moment. I can opt for any of the operating system. It may be Windows, it may be anything other. Okay. I can opt for different one. Like in the operating system, I can go for Debian, I can go for Ubuntu, I can go for Windows, SQL servers, CentOS, right? I have different option available for me. I can go for any one. Apart of that, for example, let's say I just go for Ubuntu. In Ubuntu also, I can go for different versions of Ubuntu. मेरे को कौन से version का Ubuntu चाहिए, right? 20, 22, 23, 23.0, minimal LTS and all. In the below you will find the size, a GB. So it's all about कि disk का size कितना चाहिए. I can write here 50 GB, I can write here 20 GB. It's totally up to me. So for now I'm going to write 20 GB, right? I can select this one. I am selecting a Ubuntu machine of 20 GB size, right? It's going to cost me more, like for 20 GB it's going to cost me $2, but still we can see, right? Here we may find the access scope कि scope कितना होना चाहिए. So we are going, it's more about कि उसके restrictions कितने होने चाहिए, कितना access होना चाहिए. That's something else. Talking about firewall is like आपका जो machine है उसके कौन सा सर्विस पब्लिकली अवेलेबल हो या ना हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं HTTP ऑन करता हूँ, तो अगर मैं वेबसाइट के ऊपर कोई भी सर्वर के ऊपर कोई भी वेबसाइट डालता हूँ, ठीक है, वेबसाइट होस्ट करता हूँ, वो HTTP वेबसाइट पोर्ट नंबर 80 पे चलता है, then it will be available from public. So that's something like Google by default for the security purpose तो ये सारे पोर्ट्स को एक्सपोज नहीं करता, HTTP और HTTPS ट्रैफिक्स को अलाउ नहीं करता. But if you want to go with this traffics, like if you want to allow this traffics, you have to check over here or you have to go into firewall और उसको manually on करना पड़ता है, right? So by this configuration only, अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नाम डाला है, servers के region select किया, region will be default, मैंने E2 select किया, E2 is the standard one, then I just explored कि यहाँ पे 20 GB RAM, 20 GB size चाहिए, Ubuntu चाहिए मेरे को, operating system select किया अपने लिए, right? Then I have a lot of HTTP traffic and I can just go and create. I click on this create and boom, within a minute it's going to create a machine for me. Correct? For those who are doing this along with me, like Rajesh, Aditya, what do you have to do? You have to create a machine with these configurations. Like where you have started the lab ना, जहाँ पे lab start किए थे, वहाँ पे जो configuration दिया है, like name, region, zone, series, machine type, you have to select this all same. Correct? मैंने यहाँ पे custom कुछ भी लिया है, you have to select the same and you have to create a machine, right now. Okay. Now what?
मैंने create पे click किया and my virtual machine is there. It's there, right? You can see ये virtual machine बन चुका है. Name आशुतोष machine, US West E में. इसका internal IP address ये है, public IP ये है. Correct? It hardly taking me a minute, right? A minute or एक मिनट मुश्किल से लगता है for creating a virtual machine, for creating a server on a cloud, right? Now you may ask कि अब मैं इसको access कैसे करूँगा? Correct? I can access from this SSH. So what is SSH? SSH is nothing but taking a shell access of your server or of your machine. That's shell access क्या होता है? Just like सपोज मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, एक सर्वर है, या फिर सपोज मेरा लैपटॉप है, द लैपटॉप जिसमें अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द एक्सेस ऑफ कंप्लीट लैपटॉप, ऑल यू कैन गिव मी इज दिस टर्मिनल, राइट? So what I can do everything from this terminal, right? From opening the mouse pad to opening the Firefox, everything. I can do anything from here, right? I can just check, I can open, I can exit, like so. From this terminal, I can access each and every feature of my computer. I can do anything, right? And that's what Linux offer. अगर हम Linux के पास जाते हैं, हम Linux के लिए जाते हैं, so the first thing, the major of the attractive thing, जो main thing होता है जो हमको attract करता है for the Linux, like the advantage which we get over there is the customization. Like हम अपने हिसाब से कुछ भी customization कर सकते हैं and we don't have to totally dependent upon the GUI. मेरे को graphical user interface को पर dependent नहीं रहना पड़ता है. From this terminal, from this shell, I can literally do anything, right? So for example, मुझे ये shell मिला, I click on this SSH, मुझे इसका shell मिला. I can just check here यहाँ पे कौन-कौन से क्या-क्या files I can make the file like touch my file.txt and यहाँ पे file बन गया मेरा my file.txt, right? So for this, for using this machine, you should have a basic knowledge, basic understanding of what are the Linux commands and how they are being used. So these things are like prerequisite and that's why people say कि Linux से command सीखने चाहिए, Linux important है, and this is the reason because whenever we create a machines on cloud, we don't get the RDP everything. हर बार हमको GUI नहीं मिलता. All we have to deal with is this terminal only, right? Okay. So we have created the first virtual machine. Now what is the different? What is the another task? Another task is to install the Nginx web server. Okay, so those who are doing this task with me, once you created your machine, you have to take the SSH the same way. You have to click on this SSH and why Aditya, what's showing to you? क्या error आ रहा है आपको? It's showing like name must consist of lowercase letters. So maybe you have written in the capital one. Or you may have pasted a space over there. Just delete everything and write it manually. It's saying like it should contain lowercase letters, numbers, and hyphen. All of the three. If it's possible for you, you can share the screen or you can just do. You can just let me know कि क्या है. I will suggest कि वहाँ पे GC lab जो है उसको पूरा delete करके you can just write it manually, so it's gonna be resolved. Yeah, it's done. You can turn off the screen, sharing the screen. Great. What next? Like we have created the machine. So great, Aditya, you have created the machine along with me, right? So what you have to do? You have to click on this SSH also, and after clicking on the SSH, आपको मिलेगा एक shell, the same shell. So like मैंने यहाँ पे SSH पे click किया, you will be having the shell like this. Okay. Once having the shell like this, you have to authorize by default yes. It's gonna take your 10 seconds or 15 seconds. Once you get the shell, what you have to do? You have to go to this page again, back to this page. Here you have to look further. What are the different things mentioned? You have to install an Nginx web server. What is the Nginx web server? Acha, how will you know what is Nginx?
If you know, you can just let me know. If you don't know, just let me know that नहीं पता. Simple as it. पता है या नहीं पता है? और पता है प्रवीण? ओके नहीं पता. नो वरीज मनोज, नो वरीज रोशनी. सो एंजिनिक्स क्या होता है? जस्ट लाइक सपोज आई हैव अ वेबसाइट, ठीक है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है एंड आई वांट टू होस्ट, आई हैव और ठीक है. जब वेबसाइट क्या होता है? इट्स नथिंग बट एचटीएमएल फाइल, राइट. मेरे पास एक एचटीएमएल फाइल है. एचटीएमएल फाइल कैन बी सिंपल. सपोज मैं नोटपैड ओपन करता हूँ. Not this one, I will open mousepad, right. I will add a simple HTML file like HTML body H या फिर P. I want to write header, right. H, this is Ashutosh Upadhyay. H close, then body close, then HTML close, correct. अब basic HTML source code, you can say basic page जो at the end जाकर print करेगा this is आशुतोष उपाध्याय, right. मैं इसको सेव करता हूँ कहाँ पे? म्यूजिक में या फिर ठीक है म्यूजिक में. I will share it like index.html. HTML I had saved, right. I close this. In the new tab, I'm going to open same thing from music index.html. Right, this is the page. And अगर उस HTML page को मैं browser में open करता हूँ, it's gonna render the same. Right, I can inspect, I can see the source code. Source code is same. This is Ashutosh Upadhyay, right. Now what if I want to share, I want to host this website. मुझे क्या चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो index.html फाइल है it should be accessible on my IP address. जब मैं बोलता हूँ मेरा IP एड्रेस, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा IP एड्रेस है 192.168.193.160.1, तो जब भी मैं ये वेबसाइट डालूं तो ये जो index.html है it should be accessible, right. So for that we have to host the website. तो जो होस्टिंग के लिए टूल यूज करते हैं, होस्टिंग के लिए जो सर्विस यूज करते हैं, that is nothing but Nginx. Nginx and Apache are the one of the tools you can say which is used for hosting a website. They are the hosting providers. ठीक है? So we use Apache, we use Nginx to host our websites. Okay, we are going to do a practical right now. Okay, so first of all, how we can install Nginx? यहाँ पे पूरा हमको command line दिया हुआ है like for help. So for example, there is the first command sudo apt update. You have to click on this button or you can just copy it manually like this. Then you have to go to the shell. You have to enter here save. Okay, what actually it does sudo apt update कि जब भी हम कोई Linux ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम उसको अपडेट करते हैं कि भाई सारे पैकेजेस अप टू डेट हैं कि नहीं है, राइट. सो यहाँ पे जो APT है that stand for application package and T is for terminal or something like full form exactly नहीं आता, but it is nothing but package manager. मतलब अपने जितने भी पैकेजेस होते हैं ना लिनक्स के, जितने भी मॉड्यूल्स बोल सकते हो, पैकेजेस बोल सकते हो, लाइब्रेरीज बोल सकते हो, तो वो सबको चेक करना, अप टू डेट करना, उसके लिए यूज करते हैं APT को. तो sudo apt update it gonna update our packages. तो यहाँ पे इसने पैकेजेस अपडेट कर लिया है. I will add the command clear. Then next command is sudo apt install Nginx, right. Sudo apt यानी package manager install and Nginx, correct. अच्छा, what is this sudo? Sudo is nothing but super user. तो कभी भी लिनक्स में हमको कोई चीज इंस्टॉल करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, ठीक है, सो नॉर्मल यूजर डोंट हैव एक्सेस ऑफ दिस ऑल. सो फॉर दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू एंटर sudo. तो sudo से हम बनते हैं सुपर यूजर यानी कि एडमिन यूजर, एंड सुपर यूजर हैव द एक्सेस ऑफ राइट टू इंस्टॉल, टू डिलीट एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो जब भी हम अपडेट करेंगे, जब भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे या कोई सर्विस चालू करेंगे जिससे सिस्टम के फाइल्स चेंज होते हैं, तो हमको sudo यूज करना है. ओके, नाउ व्हाट इज sudo apt install? So here I am installing Nginx, correct. It's asking me कि Nginx gonna take 7921 KB. It is around 808 MB. I will press here Y, that is yes, you can install, and it's going to install the Nginx over here.
करेक्ट। एंड वन थिंग मोर कि क्लाउड में कोई भी गूगल क्लाउड हो या AWS है, Azure हो, क्लाउड के जो वर्चुअल मशीन जो सर्वर्स होते हैं वहाँ पे डेटा बहुत फास्ट होता है। फास्ट इन द सेंस दे आर लाइक 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, totally dependent upon कौन से सर्वर्स हैं, but still they are more faster than our system, right? Okay, मैंने Nginx इंस्टॉल कर लिया, right? Now what? Now it's telling us to check whether Nginx is running or not. So it's given as the command psops grep nginx. What it does, क्या ये psops grep nginx, अगर मैं इसको same as it is डालता हूँ, it's gonna show me कि nginx कुछ तो भी चल रहा है, but क्या है कमांड, ठीक है। So for learning the command, let's break down the command. पहला क्या है ps, when I enter ps it shows me कि क्या processes चल रहे हैं, right? ps is nothing but processes चल रहे हैं। When I write ps aux, right, इट गोना शो मी कि मेरे बैकग्राउंड में मेरा जो मशीन है उसके बैकग्राउंड में कौन से जॉब्स चल रहे हैं। इट जस्ट सेम लाइक टास्क मैनेजर, विंडोज में टास्क मैनेजर होता है जहां पे हमको प्रोसेस दिखते हैं, लिनक्स में होता है psops। psops से हम चेक करते हैं कि हमारे जो मशीन है उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही है। वी कैन यूज ps-aux ops या फिर ps-aux, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने डाल दिया ps-aux या फिर ps-aux, मैंने सेम डाल दिया। ये मुझे देने वाला है कि बैकग्राउंड में कौन कौन से जॉब्स चल रहे हैं। अब क्योंकि मेरे लिनक्स में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल सकती है एंड मुझे चेक करना है कि nginx चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा पाइप। दिस स्ट्रेट लाइन यू कैन सी इज नथिंग बट पाइप। ये लाइन आपको मिलेगा आपके लैपटॉप के कीपैड पे एंटर बटन के ठीक ऊपर, स्ट्रेट लाइन पाइप, करेक्ट। यू कैन गिव पाइप एंड आफ्टर गिविंग द पाइप यू कैन राइट हियर ग्रैब। सो पाइप क्या करता है, इट सेज कि पाइप से पहले जो कमांड लिखा हुआ है वो चलने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है उसके साथ क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, ये चलाओ फिर ये चलाओ, ऐसा, राइट। मैंने पाइप लगा दिया, पाइप से पहले जो लिखूंगा पहले वो चलेगा, देन पाइप के बाद जो लिखूंगा वो चलेगा। तो लेट्स सी यहाँ पे psops पाइप grep nginx। grep क्या करता है, फाइंड करता है, जैसे हम कंट्रोल F करके फाइंड करते हैं वैसे grep करता है, ठीक है। अच्छा, मैं जब ये कर रहा हूं मेरे को आउटपुट दे रहा है। अभी देखते हैं grep करता क्या है। grep को जब मैं एंटर करता हूं, grep -help, इट गोना शो मी grep इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द पैटर्न्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं कि लिनक्स में ना कभी भी कोई भी कमांड हो, लेट्स से ps-ops हो, grep हो या कुछ भी कमांड हो, इफ यू डोंट नो कि कमांड क्या करता है, कैसे यूज होता है, यू कैन ऑलवेज ऐड द आर्गुमेंट -help। सो फॉर एग्जांपल आई विल राइट ps-help। सो दिस ps इज गोइंग टू हेल्प मी कि भाई इसको यूज कैसे करते हैं, यूसेज कैसा है, राइट। सिमिलरली grep -help, इट विल टू शो मी कि grep को कैसे यूज करते हैं। मुझे इसका यूज केस भी दे रहा है, द grep ऑप्शन एंड पैटर्न, ये पूरे ऑप्शंस हैं, ये पैटर्न्स हैं, राइट, ठीक है। लेट्स डोंट गो ऑन दैट। अगर हम वापस अपना सेम चीज करें कि लाइक psops grep nginx, वी कैन फाइंड कि nginx बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज टू सी द वेब पेज, गो टू द क्लाउड एंड एक्सटर्नल लिंक। So what it mean कि अगर मेरा बैकग्राउंड में nginx चल रहा है, इसका मतलब मेरा HTTP सर्वर चालू है। मेरा HTTP सर्वर चालू है, इसका मतलब जो भी HTML फाइल होगा वो होस्ट होता रहेगा। मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं अपने पब्लिक आईपी पे जाऊंगा, मेरा पब्लिक आईपी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये रहा, मैं पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा, न्यू टैब में इसको ओपन करूंगा। वेलकम टू nginx, you can see welcome to nginx। ये मेरे पब्लिक आईपी पे है, मेरा वही सेम आईपी ऑफ दैट मशीन। ये मशीन का मैंने एसएसएच लिया हुआ है, उसी मशीन का जो पब्लिक आईपी है, एक्सटर्नल आईपी है, वहां पे वेलकम टू nginx अवेलेबल है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को वेलकम टू nginx चेंज करना है, मेरे को कुछ कस्टम डालना है, मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड कि मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि nginx का फोल्डर कौन सा है जहाँ पे होस्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं गूगल कर सकता हूँ कि nginx default file
डायरेक्टरी, मतलब डिफॉल्ट फाइल कहाँ पे रहता है, इट गोना शो मी उसका डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है where www में, ठीक है। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, where www इज नथिंग बट फोल्डर, ठीक है। हम जो फोल्डर्स बोलते हैं ना, फोल्डर्स, उसको लिनक्स में बोलते हैं डायरेक्टरीज, ठीक है। अब किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है या बाहर आना है, मेरे को अगर डायरेक्टरी चेंज करना है तो मैं कमांड यूज करता हूँ cd, यू कैन सी cd। अभी सपोज मेरे को जाना cd स्लैश, तो मैं आ गया होम पे, यहाँ पे ये सारे फोल्डर है। अब मेरे को ये सारे फोल्डर में से होम के अंदर जाना है, मैं क्या डालूंगा cd स्लैश होम, तो मैं आ गया होम के अंदर, यू कैन सी हियर होम, राइट, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है होम, करेक्ट। अभी सपोज मेरे को डालना है एलएस किया मैंने, स्टूडेंट और उबंटू दिख रहा है, मेरे को उबंटू में जाना है, cd यानी चेंज डायरेक्टरी और उबंटू, एंटर, मैं उबंटू के अंदर आ गया, करेक्ट। अब मेरे को सपोज पीछे जाना है, उबंटू के बाहर निकलना है, आई विल राइट cd स्पेस डॉट डॉट, मैं उबंटू के बाहर आ गया, करेक्ट। तो cd क्या होता है समझा। अब देखो एंजिनिक्स का डिफॉल्ट क्या है, where www, मैं सेम चीज कॉपी करता हूँ, where www, सॉरी कॉपी, आई विल पेस्ट हियर cd where www, यहाँ पे क्या क्या है, html फाइल है, cd html, यहाँ पे क्या है index.html ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। सो ओके, इट्स हाउ मेनी ऑफ यू बीन अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट, लाइक ठीक है, GDSC cd change directory, वेरी गुड। So here we have seen कि जो CD है it's used for change directory, right? Now what next is we want कि जो यहाँ पे ये sorry कहाँ गया, यहाँ पे जो welcome to Nginx है, I want to write here welcome to GDSC, right? तो उसके लिए मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा कि ये जो HTML फाइल है वो कहाँ पे है, right? तो मैंने ढूंढ लिया कि HTML फाइल ये रहा, ये वाला फाइल है। अच्छा, अभी मुझे सपोज लिनक्स में किसी फाइल को रीड करना है, मुझे देखना है कि HTML फाइल के अंदर क्या लिखा है, आई विल यूज द कमांड कैट और वो फाइल का नाम, एंटर, तो पूरा फाइल प्रिंट कर देता है, दिख रहा है, एक HTML फाइल है, वेलकम टू एंजिनिक्स लिखा हुआ है उसमें, राइट, स्टाइल यानी CSS लिखा हुआ है, वेलकम टू एंजिनिक्स, थैंक यू फॉर यूजिंग एंजिनिक्स, इट्स द सेम, यही चीज लिखा हुआ है, सेम चीज है, राइट। सो दिस इज द फाइल, ये जो index.nginx-debian.html है, दिस इज द फाइल विच इज बीन यूज्ड टू होस्ट दिस वेबसाइट, राइट। अभी हमने कैसे किया, जस्ट एक समरी ताकि हम भूल ना जाए हमने अभी तक क्या क्या किया है, ठीक है। हमने क्या किया, गूगल क्लाउड पे गए, हम गूगल क्लाउड पे जाकर सर्विसेज में से कंप्यूट इंजन में गए, राइट, वी वेंट टू कंप्यूट इंजन, over here from this navigation we went to compute engine, we went to VM instance पे आने के बाद हमने एक VM मशीन बनाया जिसका नाम मैंने आशुतोष मशीन रखा है, you can name it anything but if you are doing for the lab you have to name it same जो उस पे लिया हुआ था, that is this one GC lab, right। हमने बनाया एक वर्चुअल मशीन बनाने के बाद हमने उसका लिया SSH, ये रहा SSH, हमने उसका SSH लिया। अभी SSH लेने के बाद हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने पहले तो अपडेट किया, अपडेट करने के बाद हम nginx इंस्टॉल किए, इंस्टॉल कैसे किए, sudo apt install nginx, ठीक है, apt यानी पैकेज मैनेजर को बोला कि मेरे को इंस्टॉल करना है nginx को, हमने nginx को किया इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या देखा कि nginx बैकग्राउंड में चालू है, वो कैसे चेक किया, हमने चेक किया उसको ps aux grep nginx को ग्रैब करके, तो हमें दिख रहा है कि भाई nginx तो चालू है बैकग्राउंड में। अब क्योंकि nginx चालू है, जस्ट टू मेक श्योर कि चालू है कि नहीं, हम वापस से VM पे आए, इसका पब्लिक आईपी है, उसको कॉपी किए, उसको न्यू टैब में ओपन किए, देन वी आर एबल टू सी कि यहाँ पे nginx जो है वो रनिंग था, लाइक वेलकम टू nginx, राइट, nginx ऑलरेडी होस्टेड है। What next? Now I want to customly edit this. मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो वेलकम टू nginx है यहाँ पे लिख के है वेलकम टू गूगल क्लाउड कैंपेन या फिर वेलकम टू क्लाउड बूटकैम्प और एनीथिंग, राइट। आई वांट टू होस्ट माय ओन वेबसाइट। मैंने इसके लिए क्या किया, व्हाट वी हैव डिड एक्चुअली, कि हमने पहले फाइंड किया कि ये जो HTML फाइल यहाँ पे रेंडर हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, राइट। फॉर दैट वी हैव चेक ऑन द गूगल, हमने गूगल पे जाकर डाला कि व्हाट इज डिफॉल्ट, वेयर इज डिफॉल्ट
nginx html फाइल। nginx html फाइल डिफॉल्ट कहां पे रहता है? इट शोज मी यूजर शेयर nginx में, राइट? यूजर nginx में अगर मैं वहां पे भी जाकर देखता ls/user share nginx html, I can find the index.html over there also, right? If I just cat that यूजर के अंदर, शेयर के अंदर, nginx के अंदर, html के अंदर, index.html, it shows me the same। तो ये this is the default web location जहाँ पे होता है, करेक्ट? नाउ आई वांट टू एडिट दिस। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास दो जगह मिल गई, एक where html के अंदर, एक share html के अंदर। हम दोनों जगह एडिट करके देखते हैं। पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कहाँ पे? where we are currently, हम currently कहाँ पे? where www html, हम ये डायरेक्टरी में है, ठीक है? अभी मुझे क्या करना है? मैं जब ls करता हूँ, ls यानी कि लिस्ट करना कि करंट डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स हैं। जब मैं ls करता हूँ, आई कैन सी यहाँ पे एक ही index.html फाइल है, राइट? आई वांट टू एडिट इट। अभी एडिट करने का दो तरीका मतलब कि मैं यहाँ पे लाइक, ठीक है, नॉट ओनली हियर, हम कभी भी टर्मिनल लेते हैं, शेल लेते हैं किसी भी सर्वर का, ठीक है? सो इफ यू वांट टू एडिट अ फाइल, यू कैन यूज विजुअल एडिटर लाइक नैनो या फिर वी या फिर विम, ठीक है? नैनो, वी या फिर विम, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मेरे को विम से करना है। मैंने विम index.html पर फाइल का नाम लिखा और एंटर किया, मेरे सामने एडिटर खुल गया। मैं आई बटन दबाया, ये इंसर्ट में चेंज होगा, यू कैन सी हियर इंसर्ट, करेक्ट? अभी मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं तो आई विल राइट कंट्रोल एक्स डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन, परफेक्ट, ठीक है? अच्छा, विम में से एग्जिट कैसे करते हैं और एंटर कैसे करते हैं दोनों बताता हूँ। तो जब मैं विम index.html डालता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे sudo करके डालूंगा। sudo क्यों? मेरे को सुपर यूजर चाहिए। अगर मैं sudo नहीं डालता, मैं नॉर्मल यूजर से खोलता हूँ, वो दिख रहा है, आई कैन सी हियर डाउन रीड ओनली। व्हाई रीड ओनली? मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, ठीक है? और जो index.html है, ये nginx का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है। बैक टू द पॉइंट, मैंने समझाया था थोड़े पहले कि हम जब भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, जब भी हम सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन के साथ खेलते हैं, तो हमें चाहिए होता है sudo परमिशन, हमें चाहिए था रूट परमिशन, करेक्ट? तो क्योंकि हमारे पास रूट परमिशन नहीं है, इट गोना शो अस रीड ओनली। तो मैं पहले इसको एग्जिट करूंगा, ये एडिटर को क्लोज करूंगा, देन आई विल अगेन ओपन दिस विद sudo परमिशन। क्लोज कैसे करते हैं? यू हैव टू एंटर कंट्रोल सी, you have to enter control C, then it's gonna show you something like this, type Q and all। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, you have to write the same shift this semicolon QA, this colon and QA। what is QA? Q यानी कि मेरे को क्वाइट करना है, ठीक है? क्वाइट नाउ, तो तुरंत QA का मतलब क्वाइट करना है, और A का मतलब मैंने जो भी चेंजेस किए सब कैंसिल हो गए, डिस्कार्ड। सो सिंपल है। कभी भी हमें विम में से एग्जिट करना है, यू हैव टू राइट कोलन QA। आई विल राइट इट ऑन द सेम कोलन QA फॉर एग्जिट द विम, ठीक है? अब मेरे को वापस से उसके अंदर जाना है। व्हाट आई विल डू? आई विल राइट sudo vim index.html। मैं sudo क्यों लिखा? ताकि मेरे को एडिट, ताकि मैं मेरे लिए रीड ओनली ना हो, मैं इसमें एडिट भी कर सकूं। मैं आई, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को चेंजेस करना है, देन फर्स्ट आई हैव टू प्रेस आई बटन। आई बटन क्यों? ताकि वो इंसर्ट मोड में आ जाए। मैं आई दबाया, मैं वेलकम टू nginx की जगह यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू गूगल क्लाउड बूटकैम्प डे 2। क्लियर है? अब मेरे को करना है एग्जिट करने के लिए मैंने क्या बोला था? QA। अच्छा, मैंने बोला था QA डालेंगे तो डायरेक्ट एग्जिट कर देना, चेंजेस सेव नहीं होता है। बट इफ आई वांट टू सेव द चेंजेस, व्हाट मैंने जो भी चेंजेस किए हैं, कोलन WQ, ठीक है? कोलन WQ फॉर व्हाट? फॉर सेविंग द चेंजेस, करेक्ट? अब मेरे को यहाँ पे अपने चेंजेस सेव करना है। आई विल राइट कंट्रोल C, देन कोलन WQ। सेव हो गया, राइट?
बट अभी भी मेरा एंजिनिक्स ही दिख रहा है, क्यों? Okay, let's do a thing. User share HTML, user share nginx, HTML index, service nginx restart. Okay, sudo, I will do that sudo. Spelling mistake. Sudo. Just check. ls nginx should be in cd user share nginx cd html cat index.html. अच्छा, okay. So I guess we got confused, but confusion इसलिए नहीं कि हम गलत थे, confusion इसलिए because हमें changes नहीं दिखा. But if you just see here, हमें changes दिख रहा है. No worries. Let me just clear your doubts. ठीक है, मैं अभी clear करता हूँ ये पूरा confusion. हमने अभी क्या किया? हमने index.html में change किया. मैं वापस से same file खोलता हूँ. I open this index.html. I can see here मैं यहाँ पे changes किया हूँ. Welcome to Google Cloud Bootcamp. बट मैंने चेंजेस किया है टाइटल में, नॉट इन द बॉडी. तो इट शुड बी विजिबल इन टाइटल. यू कैन सी इन द टाइटल गूगल क्लाउड बूटकैम्प. व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू मेक द चेंजेस इन द बॉडी इन ऑर्डर टू चेंज इन डाउन आल्सो, राइट? तो मैं इसको वापस से एग्जिट करके sudo करके ओपन करता हूँ. सेम स्पेलिंग मिस्टेक, sudo sudo. ठीक है, आई विल गो डाउन. आई विल राइट हियर इंस्टेड ऑफ वेलकम टू nginx I gonna write, I pressed I button to come in the insert mode, then I am writing welcome to Google Cloud Bootcamp day 2. I am going to save, Control C :WQ. Save. I will refresh the page and we have done. Right? Just to make sure चीजें clear है. Any confusion? Any questions? Anybody? Aditya, Brajesh, Praveen, Manoj, Apurva, Omkar, Suman, Daksh, Shyash. Clear है? On YouTube also? Any doubts? Perfect. Let's move ahead. If you have any doubt, you can just write in the chat box. You can write in the comment box. I will make sure मैं उसको क्लियर करूँ. ठीक है. Now ठीक है, अभी हमने क्या किया? हमने nginx इंस्टॉल किया. क्योंकि nginx इंस्टॉल था तो nginx का सर्विस चालू हुआ. nginx का सर्विस क्या करता है? HTML फाइल को होस्ट करता है. हमने nginx को इंस्टॉल किया था, चेक किया nginx चालू है कि नहीं. So we have entered ps AUWX grep nginx nginx. तो हमें दिखा कि nginx चालू है. क्योंकि nginx चालू है, इसका सिंपल मतलब है ये सर्वर का जो पब्लिक आईपी है वहां पे वेबसाइट विजिबल रहेगा. When I visit all these servers public IP, I can see यहाँ पे वेबसाइट विजिबल था, but I wanted to make the changes over here. ठीक है. One thing is जब भी डिफॉल्ट हम अपाची या फिर nginx को चालू करते हैं, what they tries to do, they always try to run the default location. Default location mostly होता है var/www/html. ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ var/www/html. So this is the default location. स्लैश में आता हूँ उस पे. ठीक है. Then we have edited that file and here we can just see कि हमारा edit यहाँ पे दिख रहा है, हमारा changes यहाँ पे दिख रहा है. Correct. Now for the people who are doing this along with me, if you have installed the nginx, you can just go and click on check my progress. You will find it gonna be a tick and you can see कि हो चुका है first lap, right? I can see here कि मेरा 50% हो चुका है पहले से.
50% that was to create a machine and install the Nginx, right? Now what? In order to complete this particular lab, we have 10 minutes left. Okay, 10 मिनट में lab बंद हो जाएगा. So in order to complete this particular lab, we have to complete the another task, that is to create a new instance with G Cloud. G Cloud यानी कि terminal. ठीक है? Shreyash, I will come to your question after completing this lab. Okay, it will be fine, right? Okay, for this for this second task, what you have to do? You have to go back to the page, like to cloud console. Console का मतलब GUI याद रखना. जब भी कोई बोले cloud का console, it's nothing but this GUI. जो ये वेबसाइट खोले ना हमने, console.cloud.google.com, it is nothing but the console of cloud. ठीक है? ये console में जाना है. You have to click on this cloud shell. ठीक है? Cloud shell कहाँ पे? On the top right में यहाँ पे एक terminal जैसा बटन है. You have to click on this. It's going to open cloud shell. Perfect. Once cloud shell will be open, we are going to launch another server. जैसे हमने अभी एक सर्वर, एक वर्चुअल मशीन लॉन्च किया था जिसका नाम मैंने आशुतोष मशीन रखा है, right? We are going to launch another server, but not from the console, right from this terminal itself, right? How? We are going to click on this command. If command नहीं पता, in initial you can copy the command, but I'm going to explain you ये command का मतलब क्या है. So if I just paste the command over here, it simply means I want to run G Cloud. G Cloud is a binary. It is a, you can say, a tool command to run any of the API of Google Cloud. Google Cloud में कोई भी resource manage करना है, edit करना है, changes करना है, we are going to use G Cloud. एक G Cloud होता है कि GUtils होता है. So for now we are using G Cloud. ठीक है? G Cloud space compute. Compute क्यों? क्योंकि जो instance है वो compute engine के अंदर होता है. So we are just describing कि मेरे को G Cloud से कंप्यूट के सर्विसेज ट्रिगर करना है. अब कंप्यूटर में कौन सा सर्विस? वी वांट टू ट्रिगर इंस्टेंसेस. कंप्यूटर के अंदर हमें इंस्टेंस को ट्रिगर करना है. इंस्टेंस के साथ क्या करना है? वी वांट टू क्रिएट अ इंस्टेंस जिसका नाम रहेगा GCE lab 2 और उसका मशीन टाइप रहेगा E2 मीडियम. मशीन टाइप हमने अभी डिस्कस किया था. मशीन स्टैंडर्ड मशीन E2 मशीन्स होते हैं. E2 में भी E2 मीडियम, E2 माइक्रोस थे, राइट? मशीन टाइप डिफॉल्ट E2 मीडियम. माइनस जोन बोल के रखा है कि जोन अपना डॉलर जोन होना चाहिए. डॉलर जोन का मतलब जो भी इसका यू कैन से एनवायरनमेंट वेरिएबल रहेगा जोन का, वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. आई विल प्रेस एंटर. इट आस्किंग मी टू ऑथराइज. आई विल क्लिक ऑन ऑथराइज. इट शोज मी एरर. व्हाई? बिकॉज there is nothing called as zone in the environment variable. मेरे environment variable में कोई भी zone जैसा चीज है ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी zone डाला ही नहीं था. So for that, if you just scroll to the up, एकदम ऊपर आओगे, you will find there is a command export region, export zone. दिख रहा है? Right? So you have to enter this command in terminal. So one by one, just go and enter each and every command. फर्स्ट कमांड क्या करता है? ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करता है कि भाई मैं जो भी रिसोर्सेज बनाऊंगा ये यूएस वेस्ट वाले रिसोर्सेज रीजन में बनेंगे. रीजन हमने एक्सपोर्ट किया, हमने जोन का एक्सपोर्ट किया. एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल में एंट्री डालना. तो मैं कहीं पे भी अगर डॉलर जोन लिखूंगा तो मेरे को आउटपुट में मिलेगा यूएस वेस्ट सी. ये ठीक है? अच्छा, टर्मिनल में प्रिंट करने के लिए होता है इको, ये आउटपुट में आएगा. क्लियर है? Now just go back to the command. हमें जो command run करना है, that is to create a shell, to create a server. Command is the same. G Cloud यानी वो cloud का terminal based, compute यानी compute instance वाले resources, instance यानी मेरे को instance के साथ खेलना है, create यानी कि मुझे उसको trigger करना है, create करना है. GCE lab 2, that is something like the name of this lab, of this machine. Actually this virtual machine जो हमें create करना है उसका नाम क्या होना चाहिए? That is GCE lab 2. Then माइनस मशीन टाइप यानी जो मशीन हम बनाने वाले हैं उसका कौन सा टाइप रहेगा. It can be E2 medium, it can be E2 micro, it can be different anything, right? So for this case scenario we are considering E2 medium. Then we have to provide minus zone यानी कि कौन से जोन में क्रिएट होगा, that is dollar zone. I will press enter. Let's wait for a minute. It's completed. तो GUI से फास्ट यानी कंसोल से फास्ट यहाँ पे बन गया.
You can see it takes hardly 10 to 15 seconds, right? अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए मैं कंसोल को टर्मिनल को करता हूँ नीचे, मैं कंसोल में आता हूँ और पेज को करता हूँ रिफ्रेश. आई कैन सी यहाँ पे GCE लैब 2 ऑलरेडी बन गया, हमने इसको अभी बनाया टर्मिनल से, राइट? यू कैन वेरीफाई इट ओवर हियर GCE लैब 2 एंड आफ्टर दिस आई कैन चेक माय प्रोग्रेस और मेरा टास्क खत्म हो जाएगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक और लैब चालू करना होता, टास्क हो गया, ठीक है, मेरे को एक और लैब चालू करना है यूजिंग अ टर्मिनल, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द सेम कमांड, इंस्टेड ऑफ GCE लैब 2 मैं वहां पे लिखूंगा GDSC UCOE लैब, ठीक है, मशीन टाइप सेम, जोन सेम, एंटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 done. 15 seconds. I can go here, I can refresh the page, I can see GDSC UCOE lab. 15 सेकंड में सर्वर रेडी है, right? That is the power of computation right now. That is the power of cloud. So यहाँ पे मेरा 100% हो गया है. I can just go scroll down. I can write here. I can just test my knowledge. So till now, any questions? कोई चीज जो नहीं समझी हो, कोई चीज जो ऊपर से ये बाउंसर गई है फिर नहीं समझ में आया, anything? नहीं, जो सब समझा. समझा? Great. What about आदित्य, अपूर्व, दक्ष, मनोज, ब्रजेश? Perfect, perfect, very good. So just let me know the answer of this question. Which are the following ways you can use to create a virtual machine in Computer Engine? What will be the answer? क्या आंसर आएगा? हम कौन से तरीके से दोनों? परफेक्ट, दोनों, राइट? Once you complete the lab, you have to end this lab, right? You have to click on submit and you are done. You can rate it accordingly if you want to, right? Okay, great, great. Now back to your question, Shash. So can we complete, when we get the list of the lab we have to do in this course? Shash, just let me know whether you have got enrolled into Cloud Campaign, like access code वगैरह मेल आया था? आया था? परफेक्ट, परफेक्ट. सो इफ एक्सेस कोड का मेल आया हुआ है, देन ऑन योर मेल इटसेल्फ, अपने मेल में इफ यू जस्ट ओपन दैट मेल, और जो ऑफिशियल मेल था जिसका एक्सेस कोड है, एंड द टॉप आल्सो, टॉप ओनली जहां पे एक्सेस कोड मेंशन था, वो टेबल में गूगल क्लाउड फाउंडेशन करके एक कोर्स रहेगा. यू हैव टू ओपन इट एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द लैब्स ऑफ दैट. लेट मी जस्ट चेक इफ वो मेरे को यहाँ से एक्सेसिबल दिखता है तो. I'll do it later. I will go to path. Okay, it's here only. I will scroll down a bit. This is about me. I have to go to catalogs. Cloud Foundation. Here are course. This is the course I guess you have got access to, right? Google Cloud Foundation. Is this the same course? तो अपने आपके कोर्स में यहाँ पे दिख रहा होगा, you have 1 video, 6 video, 1 quiz, 2 labs, 11 video, 1 quiz, then this 4 labs. So you have to complete all the labs in order to make it count. Labs, quiz को complete करना है. You can watch the videos if you want to. If you don't want to, you can just open the video and click on skip buttons, right?
So that gonna be good if you want to skip the videos, but still videos be informative, so you can watch if you want to. But in the case of labs, you as you asked, so for now you have to complete these labs, and after 18th of September, you have to go for generative AI one, जो 18 को मैं बताता हूँ कि उसको कैसे improve करना है, correct? Not a big deal, वो भी easy lab है, and this lab also it's too easy, you can complete it easily. Okay, great. Any further questions? Okay. So today we have covered only virtual machines. Apart of that, like अभी my lab खत्म नहीं हुआ I guess. Okay, it's already over. Let it be. खत्म होने के बाद ना it gonna show you कि what you have to do. तो mostly हमें लीव करवाता है just because account expire हो जाता है. But until account is not getting expired, what we can do, we can go to different services. Like suppose मैंने एक बार वेबसाइट होस्ट कर लिया, let's say मेरा वेबसाइट ऐसे accessible है, मैंने engineers को होस्ट किया है. What next I have to do? I have to add my resources, my virtual machine behind the load balancer. मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लॉग आउट कर देगा, या क्योंकि मेरा लैब खत्म हो गया. आफ्टर एंडिंग द लैब इट गोना एक्सपायर द क्रेडेंशियल्स एंड यू विल बी लॉग्ड आउट, नो डाउट. आई विल लॉग्ड आउट फ्रॉम हियर आल्सो, बट स्टिल. सो आई गेस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लुक फर्दर रिगार्डिंग वीपीसीज, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, अपना खुद का नेटवर्क बनाना, फायरवॉल बनाना, लोड बैलेंसेस बनाना, नेक्स्ट सेशन में करते हैं. And after completing this that much, we are going to look further regarding generative AI. कि generative AI क्या है? What are the different scopes in that? फिर generative AI के regarding हम आगे चलेंगे, like in the terms of generative AI, we will move further. कि what are the different steps we have to take, what are the different labs we have to do and all, right? So we will look after that. And one more thing I will like to mention is those who have got access to the course like of this cloud campaign one, they have to complete the courses, they have to complete the provided courses before the due date. Like it is very simple actually. Labs और जो courses उतना difficult नहीं है, you can complete it within a week, you can say within a day, you can say, right? एक दिन में भी complete किया जा सकता है, इतना simple labs है, करेक्ट. अभी जो लैब मैंने खत्म किया ये 1 घंटे का टाइम दिया था, बट इट कैन बी डन विद इन 5 मिनट्स, राइट. वर्चुअल मशीन बनाने में कितना टाइम जाता है? 15 सेकंड जाता है. 1 मिनट अगर मैक्सिमम में 2 वर्चुअल मशीन बना लिया, खत्म, राइट. फिर वर्चुअल मशीन में जाकर मैंने nginx इंस्टॉल कर लिया, हो गया. तो 1 घंटे का लैब में 2 मिनट में भी खत्म कर सकता था, करेक्ट. So it should depend upon how you are taking it. If you are taking it slow, you can go slow. You can go it by learning, not just by the sake of completing the labs and all. You should look further in the terms of learning, how much you are learning and all, right? Sorry. Okay. Okay. So I think that's all for today. If you have any questions, you can ping me on WhatsApp. You can ping on different platforms. And apart of that, this session is also live on YouTube. And those who has missed the session, they can watch in the YouTube also. And I'm going to post the same video over there. I'm not going to delete it, right? So as the ritual says, before ending the labs, before ending the meet, just if possible, you can turn on your cameras. So I can just take a screenshot, right? Just for the formality. If it's possible for you all, you can just turn on your camera for a screenshot. Daksh, Aditya, Shreyash, Apurva, Praveen, Rajesh. A bit quick. Yup, Shreyash, here. Just be frank, man. Why you guys are shying? I don't know. So I'm waiting for 15 seconds more. You can turn on your camera. I'm going to take a screenshot and then we are going to end the meeting. Daksh. Cool.
Rajesh. Yo. Perfect. So I guess we should take a screenshot, right? Okay, Raksh. Just 3, 2, 1. Smile. Great, great, great. It's done. Perfect. Thank you. Thank you all. Perfect. So we can end the session here. Thank you for joining. Thank you for your time. I don't know. I guess. ठीक है. Shesh, you have mentioned something. Like I just missed the part. किसी ने question डाला था. किसी ने कुछ डाला था. I don't know. मैंने देखा नहीं. ठीक है. Great session. Great. Thank you. Thank you. I thought there was a question over there for me. Let it be. Thank you, Shesh. And on the YouTube also, I'm going to close the sessions. Thank you for watching.